ओं नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोऽध्याय। श्री उद्धव उवाच अथोते तदनुज्ञाता भूत्वा पीत्वा शोभारिणीं त्वया ब्रह्मंसितज्ञाना दुरुक्तैर्मन्म पस्पिषु तेषां वैरेयते सेनो विषमीकृतचेतसां निम्नोचति रवावासी वेणूनामिवो मर्दयन् भावानात्ममायागतिं तमलोकवैक्यो सो सरस्वतीमुपसृष्टे रक्षमूलोपाविशत् अन्तुक्तो भगवता प्रपन्नाति हरेण सो बदरिं त्वं प्रजाहीति शोकूलं संजीहीर्षुणा तथापि तद्विपरीतं जानन्नः मरिन्दम् पृष्ठो अन्नगमं भर्तुपादविश्लेषणाख्यमा अद्रक्षमेकमासीनं विच्छिन्नं दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कीटकीटककीटं श्यामावदान्तं विरजं प्रसन्ता चारुनललासनं तरुलोचनं दुर्भिचतुर्भिपीडितं पीतसाम्बरेण सु वामो उरावधिशीतो दक्षिणाङ्ग्रे सरोरुहम् अपासीतार्भकाश्वसोगमक्रीतां त्यक्त्वा पिम्पलं तस्मिन् महाभागवतो दैत्यानुश्रीसखा लोकान् अनुसरन् सिद्धो आशसाद्दिशया तैस्यानुरक्तेषु मुनिर्मुकुन्दो प्रमोदवानतस्कन्दरस्य असन्नतो ममानुरागहास समीक्षयाभिषयन्यनुवाच श्रीभगवानुवाच वीराहम् अन्तैर्महिषितं ते धरामि यत्तत् दूरपापजन्मे सत्रे पुरा विशशिजां वसूनां मत्सिद्धिकामिनो वसूतयिष्ठ सो ये सो साधो चरयो चरमो भवानाशां मरितस्ते मदनुग्रहो जन्मान्निलोकान् रहो ऊषिजन्तं दृष्ट्वा ददिश्यां विशरानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायो नद्यो पद्मे विसन्नायो ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमाववासं यच्छूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादि प्रोक्त परमेश्वपुंस प्रतीक्षानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोऽर्थ उर्मस्थलीलाक्षरन्तं मुञ्चन् शुचो प्राञ्जलिरा भवासि कौन्नीशोते पादसरोजता भाज सुदुर्लभो अर्थेषु चतुष्पदीहो तथापि नाहं प्रविशोनि भूमन् भवत्पदम्भोजनीशे बलोत्सुकः कर्मण्यनीयैषो भवो ऐष भविष्य ते दुर्गाश्रयो अठारी भयात् पलायन कालात्मनोजत् प्रमदायुतश्रमो स्वात्मन् रते खिद्यन्ति खा विरामीह मन्त्रेषु मां वा उपहूयो जत् त्वमकुष्ठितामखण्ड जरात्मबोध पृश्ये प्रभो मुग्धैवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मारः प्रकाशं प्रोवासो कस्मै भावान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणायो भर्तवदञ्जसा जत् बीजिनं तरेम इत्याबीजितहृदायो मध्यांसो भावान् परो आदिदेशा अरविन्दख्यो आत्मनो परमां स्थितिं सोऽयैवमाराधितोपादं तीर्थादधि ततत्वात्म विबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिपीत्यो देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनल्लादो वियोगाति युक्तो प्रभ गमिषे दायतां तैषो बदर्याश्रममण्डलं तत्र नारायणो देवो नरच्यो भावान्निशि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ शिशुकोवाचो इतु उद्धवा उपकारणे सूर्यदां दूषं वयं ज्ञानेनाशेनक्षत्या शोकमुत्पतितं बुधः सोतं महाभागवतं व्रजन्तं
कौरवर्षतं विश्रम्भाद् अभ्यजत्येदं मुख्यं कृष्णा परिग्रहे। श्री विदुरुवाच ज्ञानं परं स्वात्मा रहो प्रकाशं जराहो योगेश्वरो ईश्वरस्ति वक्तुं भवामन्नो हरति दर्ढो विष्णोर्भूत्या शोभृत्यर्थ कृतसरन्ति। श्री उद्धवोवाच ननु ते तत्र संरज्य ऋषिः कौसारयो अन्तिमे सख्यात् भवतादिष्टौ मर्त्यलोकं द्वासता। श्रीशुकोवाच इति सौ विदुरेणो विश्वमूर्तेर्गुणाकथा सुदया प्लावितो रूठापो खिनमीवो पुलिने जमस्वष्टां समुत्थितो उपगर्भिणीसां ततोऽगात्। राजोवाचो निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजाधिभोजस्वधीरयूथ पशुपथेषु मुख्यः सोऽतो कथमाविष्टो उद्धवो जद्धरैरपि तत्यजो आकृतिं तजीश। यशोवाचो ब्रह्मशापापदेशेनो कालेनामोघवञ्चितः संहृतो शोकुलं स्फीतं तख्यन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोका उपरते मयि ज्ञानं वरस्यम् आहृत्युद्धवो ये बाध्या सम्प्रत्यात्मवतांबरः जो नोद्धवो नापि मन्युन्यो जद्गुणैर्नादीतो प्रभु अतो मुद्भयनं लोकं ग्रहणीयो तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरुना सन्दिष्ट शब्दजोनिना बदर्जाश्रममासद्यो हरिमीजे समाधिना विदुरो अप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णेषु परमात्मनं क्रीडयो पट्टदेहैषु कर्माणि श्लाघितानि च देश्यासञ्चतस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां वैक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरुश्रेष्ठो कृष्णेनो मनसखितं ध्यायन् गति भगवती भागवती रुरोधो प्रेम विफला कालिन्द्या कतिभिः सिद्धा अहोभिर्भरतर्षभा प्रपद्यतो सो सरितं जत्रो मित्रासुतो मुनिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थाध्यायो श्रीमद्राधा गोविंद कृष्ण प्रचारानंद बोल हरि बोल हरि बोल। भगवते वासुदेवाय। पंचमाध्याय शिशुवासो द्वारी दुनद्यारी सबो कुरुनां मैत्रेय मासीना मगाधबोधम चत्वोपस्थित्याच्युतवा सिद्ध प्रोपस्यो सौशल्या गुणभीर्तित। श्री विदुरुवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको नो ते सुखं वन्यादुपाय परमं वा विन्देतो भूयस्ततो एव दुःखं
भरतयुक्तं भावान् भजन् जनेषु कृष्णाद्विमुखैषु दैवाधर्मशीलेषु सुदुःखितैश्च अनुग्रहायैव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनैश्च तत्साधुर्वर्जादिषु वर्त्मसंग संसारधीतो आराधितो भगवान् जीवनो पुंसां हृदि स्थितिजस्सचि भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो जन्यात्मतन्त्रो भगवान् सजीश यथा ससर्जाग्र इदं निरीहं संस्थाप्यो वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनर्षे इदं निविश्यो शेते गुहायांशो निवृत्तिवृत्ति योगेश्वरतीश्वरो एको येत धनु प्रविष्टो बहुधा जठासि क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमायो कर्मण्यवतार भेदे मनो नो तृप्यतापि शून्यता नो शुश्लोक मौलिनसु हरितामृतानि जैस्तद्भेदै रजिलोकनाथो लोकान् स लोकपालान् असिग्रीप परजत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदो अधिकृत प्रतीतः येनो प्रधानाश्रुतो आत्मकर्म रूपा विधानञ्च विदां विदत्त नारायणो विश्वसिजा जोनिनिरतशूनो वर्णयो विप्रवर्ज परापरेषां भगवान् व्रजानि सूतानि मे व्यास खाटविघ्नम् अतृप्यं फुल्लसुखभानां तेषां हृदे कृष्णकथानुतौघात् कस्तिप्लुयात् तीर्थपदो अभिधानात् सत्येषु जो सूरिभिर्युज्यमानात् जो कर्णना नारी पुरुषेषु जातो भवप्रदां श्रीहयन्ति श्रीनट्टे मुनिर्विवेक्ष्यो बदद्गुणानां सखापि ते भारतमाहो कृष्णः यस्मिन्नां जन्या सुखानुवादे मतिर्गृहीत्वानु हरेः कथायां सा सद्दधानेषु विवर्धमाना विरक्तिर्मन्त्रेषु करोति पुंसा हरेः पादानुस्मृति निर्वितैश्च समस्त दुःखाप्या आशु धत्ते तान् शैत्यान् विदोनु सोचे हरे कथायां विमुखान् खिनोति देवो निमिषस्तु जेषामायुर्वृथा बाधो गतिस्मृतिना तरेश कौशारवो सर्वधातु हरो कथामेवो कथासुसारम् उद्धितो पुष्पेभ्यो इवार्तवन्दो शिवायो नु कीर्तयो तीर्थकीर्ति स्वविश्वजन्मस्थिति संयमार्थे कृता अवतार परि अप्रोगृहीत शक्ति चकारो कर्मण्यति पुरुषानि जानिस्सरो कीर्तयोतानि मध्यम शिशुवाचो एवं स्वभावान् स्पृशो क्षेत्रा कौशारवो मुनि पुंसानि शेषार्थेनो तमाहु बहुमानेन श्री मैत्रेयवाचो साधुपृष्ठं त्वया साधो लोकान् सर्वानुगृह्णता कीर्ति वितन्नता लोका आत्मनो अदोख्यजात्मनो नैतचित्रं त्वयि क्षत्रपादरायनो वीर्यजे घृतो अनन्यभाविनो यत्त्वया हरिरीश्वरः मान्यव्यासापात् भावान् प्रजा संयमानान् नमो भ्रातुपीते भुज्यो भुजि जज्ञां जातो सत्यवती सुता भवान् भगवतो नित्यं सन्मतो सानुगैष्य जैस्या ज्ञानोपदेशेनो वादि सद्भावान् व्रजम् अथो ते भगवल्लीला जोमायुरुगृहीता विश्वश्रीत्युद्भवास्तार्था वर्णयामन्युपूर्वश भावान् एको आसीत् अग्रो आत्मात्मनां विभु आत्मेशानुगतावात्मा नानावच्युपलक्षण शोभायेषुतरा दृष्टा नापि सद्दृष्टे मेकरात् मेने असन्तमिवात्मानं सुप्तशक्ति रसूत्तति सा वायेतेषु संद्रष्टु शक्ति सदसदात्मिका
माया नामो भाभागो जयेदं निर्ममी विभु कालवृत्या तु मायायां गुणमज्जामरुक्षज पुरुषेनात्मभूतेनो गिर्जामाधत्व वीर्यवान् ततो अभवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालशोधितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जमदो अष्टमो निर सोऽप्यांशो गुणाकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचर आत्मानं व्यकरोन्दात्मा विश्वशैषोऽसि शिक्षया महत्तत्त्वाद् विकुर्वाण देहतत्त्वं विजायत कर्जकारण कर्तृत्वा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजशत्रु तामसच्चित्तेऽहं त्रिधा अहं तत्त्वात् विकुर्वाण मनो वैकारिकादहुत् वैकारिकासु देवा अर्थभिव्यञ्जनं जतो तयसानेन्द्रियेणैव ज्ञानकर्म कर्मण या मयानिषु तामसो भूतसूक्ष्मान्द्रियजतो खाङ्लिङ्गमात्मन कालमायासयोगेनो भगवद्विक्षितं नभः दवसो अशूनिरं स्पर्शो विकुर्वन्निर्ममो नीलम् अनिलोपि विकुर्वाणो नवसोरुबलानितः ससर्जो रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकैशोलोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायासयुगत ज्योतिषाम् अम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वन् ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामायार् कालमायासयुगत भूतानां नभोऽसि आदिना यद्यद्भाव्यापरावयं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदु एते देवा कला विष्णु कालमाया अंशलिङ्गिन नानात्वादसु क्रियानिशा प्रोषु प्राञ्जलया विभुं श्रीदेवासु नमामते देवो परावरीत बिन्दं प्रपन्नातापो पाशमातपत्रं जन्मूलकेता जटयो अंजसो रूषा सारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धातर्यस्मिन् भवो ईशा जीवाष्टापत्येनाभियता नो शर्म आत्मन् लवन्ते भगवत् वाङ्गी सायां सविद्या आश्रयीम मर्गन्ति जत्ति मुखपद्मनीरै सन्दपनैर्जयो विविक्त जैस्या घमर्षै दशैरात्साया पदं पदं तीर्थपदो प्रपन्ना जश्रदया श्रुततेभ्यासु भक्त्यासु मुनिज्यमाने रेयो अभयायो ज्ञानेनो वैराग्यबलेनो धीरा ब्रजेमोटतरङ्गी सरोजपीठं विश्वेषु जन्मश्रीति संयमार्थे कृत्वा अवतारेषु पदाम्बुजं ते ब्रजेमो सर्वे शरणं जदीश स्मृतं प्रशिष्यत्यं भीपुंसां जत्साधुबन्धे सति देहदेः ममाहमित्या मृत्युरः दुराघ्राणां पुंसां सोऽधुरं वसतोऽपि पुर्यां भजेमो तत्ते भवन प्रजाब्जं तान् वै असत् वृत्तिभिरक्षितेऽर्थे पराधीतान्तर्मनसो परेश अथो नोपैसन्त्यारुगायो नूनं ते पदन्याद्विलासलक्ष्म पाणिनो ते देवो कथानुशूरा प्रविद्य भक्त्या विशदाशयाति वैराग्यसारं प्रतिलभ्यबोधं जठाञ्जसा नीयु विकुण्ठधीष्णं तथा परेशात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठं त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्नुतो सेवयाति तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्य त्वयानुशिष्टा श्रीवीरात्मभीष्म सर्वे वियुक्तसो व्यारतन्त्रं नो शक्नुर्मस्तत् प्रतिहर्तवीते
यावद्बलिं ते यज हराम काले यथा भयञ्च अन्नमदामुदत्र यथो भयेषां तो इमे हि लोकाबलिं हरे हरन्ति अनन्त्या अनन्तगुरः त्वं नो शूराणामसि सन्निधानात् कूटस्थो अद्य पुरुषः पुराणः त्वं देवो शक्त्यां गुणकर्मजो नो रेतस्तुल्यां कवि मादधेयजः ततो वरं मत्प्रमुखा जदर्षि बभुर्भीमानान् करवाम किंकि त्वं नः सोचख्युः परजेयी शक्त्या देवो क्रियार्थे जनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे महद्युत् उत्पत्ति नामो पंचमध्याय। श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यान बल हरि बोल हरि बोल। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठाध्याय। श्रीऋषिरुवाच तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य स सुप्रसुप्तलोकतन्त्राणां निसंयो गतिमीश्वर कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रत्शक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपराविशत् सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेतस्वरूपेण तङ्गनं भिन्नं सयोजायामासु श्रुतं कर्मो प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिमात्राभिरीषि पुरुषं परेण विषराजस्मै मात्रया विश्वसि गणा सुखैर्वाण्यो अनासाद्यो दस्मिन् लोकाचराचर हिरण्मयो जुषो पुरुषो सहस्र परिवत्सरान् अंडकोशो वासाप्सु सर्वसत्तोपबृंहित सो वै विश्वक्षिजां गर्भे दैवकर्मात्मा शक्तिमान् विवशा जात्मनात्मानमीय कथा दशरातिरः येषु शेषसत्त्वानाम् आत्मसंसो परमात्मनो अद्योवतारो दत्रासौ भूतो ग्रामो विभव्यते सज्जात्मा सारिदैवत्यो सारिभूतो इति त्रिधा वीरात् प्राणो दशविदो एकदा ध्येयेन स स्मरन् विश्वसृजामीशो यज्ञः विद्यापीठमरक्षजः विराजमवतत्सेनो तेजसैधां विवृते अतो तैषा भीतस्तप्सेषु कतिरार्हतामिहो निर्विद्यन्ति देवानां तानि मे गरतोऽसिनो तैषाग्निरैस्यं निर्भिन्यो लोकपालो विसत्पदं वाचा स्वंसेनो वक्तव्या वयासो प्रतिपद्यते निर्भिन्यतालुवरुणो लोकपालांसो विसद्धरे जीवायां सेनो षोडशान् जयादो प्रतिपद्यते निर्भिन्नीयसिनौ नाशे विष्णुराभिषतां कृतं घ्राणीयनां सेनो गन्धेषु प्रतिपत्ति भवेत् निर्भिन्ने अखिनी त्वष्टा लोकपालो अभिसद्विभो चक्षुषां सेनो रूपायां प्रति निर्भीतो भवेत् निर्विन्नध्यैः सर्वाणि लोकपालो विलोभिषत् प्राणिनां सेनो संस्पर्शो येनाशो प्रतिपद्यते कर्णवैशो विनिर्भिन्नौ गिंसां स्वां विविशु दिशा घ्राणीनां सेनो शब्दैशो सिद्धिं जेनो प्रपद्यते तस्मैशो विनिर्भिन्या विविशुर्धिंसा मोसरि अंशेनो रोमविकण्टुं गैरसौ प्रतिपद्यते मेन्द्रं तैषो विनिर्भिन्न स्वादिंशुकोपाविशन् रेतमांसेनो येनात्मा मानदं प्रतिपद्यते गूढं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेशो आविशन्
पायुनासेनो जेनासो विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावेशो विनिर्भिन्नामिन्द्रोऽसो पतिराविशत् वर्तायानासीनो पुरुषो जयावृत्तिं प्रपद्यते पाटावेशो विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांसीनो पुरुषो जयाप्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिर्जैसे विनिर्भिन्नां वागीशो दिंसा आविशत् बोधेनांसेनो बोद्धव्यं प्रतिपपति जतो भवेत् हृदयं काञ्चनिर्भिन्न चन्द्रमा दिंसामाविशत् मनसांसेनो जेनासो विक्रियां प्रतिपद्यते सतञ्चैषो विनिर्भिन्नं महान् दिंसामुपाविशत् इत्येन नांसेनो जेनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते शिष्णो ऐषो जौधरा पद्भ्यांसं नाभिरूढपद्यतो गुणानां वितेजेषु प्रतीयन्ते सुरादय ऐत्यान्तिकेनो सत्येनो देवं प्रपेदिरे धरां रजो स्वभावेनो प्रणयो देशो तानु तार्तिकेनो स्वभावेनो भगवन्नाभिमासिता उभयोरन्तरं व्योमो जे रुद्र पार्षदाङ्गदा मुगतो वर्धतो ब्रह्मन् पुरुषैषो कुरुद्भा जष्टु मुख द्वादशपर्णानां मुख्यो अभूत् ब्राह्मणो गुरु बाहुभ्यो वर्धितो क्षेत्रं क्षेत्रीयस्तदनुव्रतो जो जातस्त्राटिवर्णान् पुरुषो कण्टकखिता बीसो अवर्तन्तु तैस्यो व्यलोकवृत्ति करीभो वैशस्तदुद्भवो वार्तां नृणाङ्गो समवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो ज्ञाने यज्ञे शुश्रूषा धर्मविसिद्धे तैषां जातो पुरा शूद्रो सद्वृत्त्या तुष्यते हरिणा ये ते वर्णा स्वधर्मेणो यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयान्तविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सो वृत्तिभिः ये तत्ख्यट्ट भगवतो दैवकर्मात्मरूपिण कोशधरानानुपर्तुं जो मायावलोके तरापि गत्याम्यङ्ग्यो यथा रति तथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सर्कर्तुं धीरमैष्याभिधानसतिम् एकान्तलाभं भजसो नुपुंसो सुश्लोकमौल्यन्द्य गुणाम गुणवाहु श्रुतेतो विद्वद्भिरूपाकृतं कृतात् कथासुरासुधायामुपप्रयोगम् आत्मनोपसितो वत्सो महिमा कविनानिना सत्सेवमानाग्रसस्ते धिया योगपक्कया ततो भगवती माया मायिनामपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मा वर्त्मात्मा नो वेदो किमुता परे जतो अप्राप्यो न्यवर्तन्तो जातञ्चो मनसोऽसहो अहञ्चन्य इमा देवास्तस्मै भगवती नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे षष्ठाध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रजानन्दे बोल हरि बोल हरि बोल। सप्तमध्यायो श्रीशुकुवाचो एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं दैत्यानुसुतो बुध प्रीणयन्निव भारत्या विदुरो प्रत्यभाषत श्रीविदुरुवाच ब्रह्मन् कथं भगवता चिन्मात्रायैष्या विकारिणो लीलया वापि युद्धेयं निरुनेशो गुणात्मना गुणक्रिया क्रियायामुद्यमर्थेषु कामशिक्रियशिष्याजतो स्वतः स्थितैषु कथं निवृत्तैषु सदात्मत असाक्षित् भगवान् विश्वं गुणमध्यात्ममाया तया संस्थापयत् तद्भूयो प्रत्यापितष्यति देशतो कालतो जोषा अवस्थाता गतो अन्यतो अभिलुप्तामबुद्धात्मा सो युध्यति जायथा कथम्
भावानेको ये वैषु सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितो अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिकुटः ये तस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यति ज्ञान संकति तन्नो परानूढो विभो कस्मलं मार्दं महत् विशुवासो सो इत्थं चोदितो क्षत्रा ततजिज्ञासु नामुनि प्रत्याहु भगवत्चित्तो स्वयं गतस्मया श्री मैत्रेयवाचो श्रियं भगवतो माया जन्येनो विरुध्यते ईश्वरेषु विमुक्तेषु कार्पण्यमूतो बद्धनम् ददर्थेनो विना मुख्यो पुंसो आत्मा विपर्जया प्रतीयतो उपद्रष्टु सोशीरोच्छेदनादिक यथा जले चन्द्रमसो कंपादिस्तर्कितो गुणो दृश्यते अन्नपि द्रष्टु आत्मानोरात्मनो गुणो सो वै निवृत्तिधर्मेणो वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्तियोगिनो तिरोद्धत्ते शनैः यथेन्द्रियो परामोघ द्रष्टात्मनि परिहरौ विलियन्ति तदा क्लेशा संसुप्त सेवो कृष्णस्य अशेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मूरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दा पराग सेवा तारितातलब्धा विदुरुवाचो संसिन्नो संशयो मध्यं तवो सुप्तासीना विभु उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रदावति शब्दे तद्व्यारितं विसन्नात्मा मायायनं हरि अवाच्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं जो दद्वहि जच्चो मूढतमो लोके जच्चो वृद्धि परंगतो ताबुभौ सुखमाधेतो क्लेशन्त्यान्तरयितो जनम् अथर्भाव विनिशिष्टो भीतैशापि नात्मने तच्चापि जुष्मत्तरणार्षेवाभ्यां परानुदे जत्सेवया भगवतो कूटस्थैषु मरुद्विषा रतिरासो भवेत्तीव्र पारियो व्यासनादन दूरापादिवतल्पस सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु जत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन शेषाग्रे महारादीनि स्वीकारान्यानुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृतो तदनु तमनु प्रविष्ट सद्भिः जमाहुरज्यं पुरुष तत्संग्रह रूपाहुकं जत्रो विश्वो इमे लोका स्वविकासंसु तो आसते यस्मिन् दशविधो प्राणो चन्द्रियार्थी इन्द्रियत्रिभिः तयोरितो जतो वर्णा सद्विभूतिर्वरस्वनो जत्रो पुत्रैषु नत्रिभिः सौ गोत्रजै प्रजाभिहिताकृतयो आसन् जाभिरीदं ततं दुर्गा चैवानुसर्गांशु मन्युन्मन्वन्तराधिपान् इति सापि वासांशो वंशानुचरितानि च उपर्जा दत्तो ये लोका भूमेर्मित्रात्मजाय सति तेषां संस्थान प्रमाणञ्च भूर्लोकैषु वर्णय तीर्जं आत्मनु सदेवानां सरिषि पतन्त्रिणां वदो नो संसर्गव्यूहं गर्भस्वेद द्विजोद्भिदा गुणावतारणै विश्वेषु स्वर्गस्थित्यभ्यासयं श्रीजतः श्रीनिवासेषु विचक्षेदारविक्रमम् वर्णाश्रममरीभागांशो रूपशील स्वभावतो ऋषीणां जन्मकर्माणि देवेशो विकीर्षणम् यज्ञशो बीतानानि योगैश्यासो पठो प्रभो नैष्कैर्मैशेषो जं संख्य असंख्येषु तन्त्रं वा भगवदस्मृतं पाषण्डपथवैषम्यम् अप्रतिलोममणिवेशनं जैवेशो गतयो दांशो यावतीर्गुणकर्मजा धर्मार्थकामोख्यानां निमित्तन्य
विरोधतो वार्तायां जनि शेषो सुतेषु विधिं पृथक् सद्देशो विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्वमीरसो ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिं दानेषु तपसो वापि जस्येष्टा पूर्तयो फलम् प्रवासस्थैषो जो कर्मो यच्चो पुंसो उटापति जेनो वा भवांस्तन्मे धर्मयोजिन मार्दनो संप्रसीदति वा तेषामेतार्था हि मे अनघः अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां चोद्योत्तमम् अनाप्रश्नमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्तानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंग्रहो तत्रेवं सो उपासीरन् को उच्छित् अनुशीरति ऋषिषो संस्थानं स्वरूपं वा परिशच ज्ञानं चो नैवं यत्तद्गुरुशिष्य प्रयोजनं निमित्तानि सो तस्येहो प्रत्यन्ये अनुभवो सूरिभि सतो ज्ञानं कूटो पुंसां भक्तिर्वैद्यमेव च एतान्मे पृच्छतो प्रश्नान् हरे कर्मो विदुषया ब्रूहि अज्ञैष मित्रत्वात् विजयान् सतकिषु सर्वे वेदान्तु जज्ञासो तपोपदानानि सानघ जीवां भयोप्रदानेषु नो कुर्वीरन् कलावपि श्रीकुशुवास सो इत्थमा पृष्ठमा पुराणकल्पो कुरु प्रधानेनो मणिप्रधानः प्रविद्यर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्त्वं प्रहसन्निबाहु इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे सप्तमोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रत्यानन्द बोल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमाध्याय सत्सेवनीयो बतो पूर्ववंशो जल्लोकपालो भगवत्प्रधानो बहुवीथैर्जिता कीर्तिमालां पदे पदे नूतनैश्च भीक्ष्णं सोऽहं नीनं फुल्लसुखाय दुःखं महत्कथानां वीरमायुतेस्य प्रवर्ते भागवतं पुराणं जराहो सख्या भगवन्निशिभ्य ऋषिभ्यो आसीन मूर्भ्यां भगवन्तमद्यं संकर्षणं देवमुकुन्दसत्तं बिभित्सवन्तमत परेशो कुमारमुख्या मुनयो अन्यस्पृशन् तमेव चिन्त्यं बहुमायन्त यद्वासुदेवा विदन मामनन्ति प्रत्यग्भीताख्या अम्बुजकोशमीश दुन्मीयन्तं विबुधो अदराय सदुर्न्यातादे सोजता कलापैरूपस्फी सन्त चरणोपधानं पद्यं जदर्शन्त्या हीराजकन्या स्वप्रेमो नानाबलिभिर्बलार्था मोहगृणन्तो वसनानुरागस्थलत् पदे नैषकृदानि तजज्ञा किरातसहस्रमणि प्रवेक प्रज्योतिदो फनासहस्रं प्रोक्तं किले तद् भगवत्तमेनो निवृत्ति धर्मातिरवटायुधेन सनत्कुमाराय सोचाहो पृष्ठो संख्यायनांगधीतव्रताय संख्यायनो परमहंसमुख्या विवक्ष्यमानो भगवद्बुद्धिविभूति जगादसो अस्मद्गुरुविन्दितायो परापरेशायो प्रियपतिस्व प्रोवाचो मध्यंसो दयालुमुक्तो मुनिपुलस्त्योम पुराणमद्यं सोऽहं तथैतत् कथयामि वत्सो
पर श्रद्धालवी द्वितीय मनुवृतायसु उदाप्लुतं विश्वमीदं जरासि जन्निद्रया निमीलितं द्विन्यमीलय ऐन्द्रतल्ले धीयान् एको कृतज्ञनो स्वात्मजौ नीरिह सो अंतशरीरेर्पीठ भूतसूक्ष्मो कालात्मिका शक्तिमुदीरयमान् उवाच तस्मिन् शरीरे स्वे शरीरे पदे स्वे यथा नले दारुनिरुद्धविर्ये चतुर्युगानांसो सहस्रमत्सु सपन् शयोति रीतया सोऽशक्य कालक्षयारीतकर्मो तंत्रो लोकान् पीठान् तद्दृशेश्वरेः तैस्यार्थ सूक्ष्माभिनिष्टदृष्टिरन्त गतो अर्थोरसाटनीयम् गुणेन कालानुगतेन विद्धो सूर्यङ्गुस्तद्वाद्भिद्यते नाविदेशा सो पद्मकोशा ससोदातिष्ठत्कालीनो कर्मा प्रतिजोडवेन सरोजिषा तत्सलिलं विशालम् अद्विज्योतया नरक इवात्मजोनि तल्लोकपद्मं सो उवायेशो विष्णु प्राविविशत् सर्वगुणात्मभासं तस्मिन् स्वयं वीरमयो विराटा स्वयं भूतं जं स्नो वदन्ति सोऽभूत् तैस्यांसो शाम्भोरुह कर्णिकायामुपनीतो लोकमपश्यमान् परिक्रमव्योम्नि निभृतनेत्रौ चत्वारि लेभे अनिदिशां मुखानि तस्माद्युगान्तस्वानावघूर्णदलोर्मीचक्रात् सलिलद्विरुद्धम् अपासीतो कञ्चन लोकतत्त्वं नानात्मपद्वा विददादिदेव सोये सोऽसा आमब्जपृष्ठे ये तर्कूटो बाब्ज मनन्यपरप्सु अस्ति जतस्तादिहो किञ्चनै ददधिस्थितं तत्रो शतास्यु भाव्यां सो इत्थमुद्दिश्यो तज्जनाना तीराभिरन्तर्जलाभिवेशो नर्वागतस्तत् स्वराणां नरनीलाभिं वितन्नस्तद्विन्दताहो तमेस्य पारे विदुरात्मतः सत्रं विचिन्नतो अभूत् सुमांस्तिनीमि ज्योतिभाजां भयमीश्वराणां परिक्षीणोत्यायुधरसो यो मिहेति ततो निवृत्ते प्रतिलब्धकामो स्वरिञ्चामासद्यो पुनः सो देव सनिर्जित सापनिर्जित जितो न्यासित दारुष समाधियोग कालेनो सोऽजो पुरुषायुरासि प्रभृति योगिनो विरुर्बोधः ओढा स्वयं तदन्तर्हृदये अवभाटन् पैसतापसन्ममो जन्नो पूर्वम् मृणालगौरारयत शेषभोगपर्यङ्कयेक पुरुषंशयानम् अनातपत्रायुधमूर्धयत्न दुर्विबद्धान्तर्जुगान्ततोषि तोयि प्रेक्ष्णां क्षिपन्तं हरितोपफलाद्रे सन्ध्यात् धनियोरुरूप्नमूर्ध्ना रत्नोदरायो ददीशौ मनुष्यापनसजो बीनु घूर्जाङ्घ्रिपाङ्घ्रि आयामतो विस्तरत समानदेहेनो लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणां शुष्कानां क्रीतस्यापाशितवेशदेहं पुंसां सुकामया विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदूघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखिन्युमयू मुखभिन्नङ्गुलीरुचारपत्रं मुखेनो लोकार्तियचित्तेनो
परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन सोनायितेन परविश्वभावा प्रत्यजन्तं सुमनेनु सुप्रजा कदम्बकिञ्जल्कपि संगवाससा स्वलङ्कृतं मेघलया नितम्बे हारेणो चानन्तधनेनो वत्स श्रीवत्स वैख्य स्थलवल्लभेन परार्धकेयूरमणिप्रभापवेक परिचष्ट दोर्दण्ड सहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रीपेन्द्र महीन्द्रभोगै रधिपीठ बलसम दशारौको भगवन् महीन्द्रबन्धं सलिलोपगुरहं किरीटसहस्र हिरण्यसिंह माभिर्भगवत् कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतनाम्ना राममधुव्रतस्य सुकीर्तिमर्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुबब्जज्ञामं त्रिभावपि परिक्रमं पधानीकैरुरासरं तर्धेवो तन्नाभीरसरोसरजमात्मानमन्तः शोषणं वियच्च ददर्श देवो जगतो विराटा नटः परं लोको विसर्गातिष्ठि सुकर्मबीजं रजस्तपोरतो प्रजा विशस्यन्नेवो दृष्ट्वा अन्तौ द्विसर्गभिमुख विद्यमानामव्यक्त नाम मनोविशेषात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विजुरमैत्रेय संवादे भगवत अष्टमोध्यायो श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंद बल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna